हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डिस्कशन ऑन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चंस। हम लोग मेंस 2021 के क्वेश्चंस देखेंगे। वी विल सी व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 2013 में ये सब्जेक्ट आया डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तब से लेकर अब तक हर साल एक या दो क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आ रहे हैं विदाउट फेल। This year also UPSC has not diverged from the trend. It has asked two questions, one of 10 marks, one of 15 marks. So total आपके 25 marks के questions आए हैं, and these questions were on expected lines. ठीक है, तो that is a plus point for us. But they were also a little broad in their scope, and जो उनका focus area था वो थोड़ा सा हट के था. We will see how the focus is different from the previous questions. But this is a very unique trend that we can observe, because UPSC has asked almost all types of disasters in the recent past from 2013 till 2020. So now it is trying to experiment with the questions, and it is trying to broaden the focus. तो हमें थोड़ी सी in-depth knowledge चाहिए. Otherwise the basic knowledge will be sufficient also, but if we have a little bit extra knowledge, that is also a plus point for us. So we will discuss the approach and the main points that you can write in these answers. The standard answers will be very easy for you, because these are on the standard lines. So let us discuss the question number 8. तो ये question पूछता है, discuss about the vulnerability of India to earthquakes related disaster. Mind you, it is not asking about the earthquakes, it is asking about the earthquake related disasters. So there is a difference between the two. So earthquake related disasters, and in the second part of the questions, it is also asking give examples including the salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last 3 decades. ठीक है, तो it is not specifically asking only about the earthquake, it is also focusing upon earthquake related disasters in different parts of the country. तो the first part of the question can be easily answered. It is a standard question, so you can give the standard definition. So for example, you can write, as per the earthquake vulnerability map of India, more than 58 or 59% of India is vulnerable to earthquakes. ठीक है, if possible, you can draw a small map of India based on this. Even if you are not able to remember this map, it is very easy to draw the map. For example, you can draw the map very easily. Like this, you can easily draw the map. So even if you draw the top half of the map, that is also fine. Okay? It is not required that you draw the complete map of India. Only the top half can also work. If you want, you can complete it using the peninsular portion like this. But it is only sufficient. Only the top half is also sufficient. So in this you can show the high risk areas. For example, the Himalayan areas like this, and the entire northeast area like this. Okay? The areas of Sikkim, this area which is adjacent to the zone 5. So this is zone 5 area, zone 5, and this is zone 4. So you can always draw such kind of small maps, rough maps, so that you have you can give a basic idea to the examiner कि you know roughly the locations at which there is high vulnerability areas for earthquakes. Now let us come to the second part of the question. Discuss about the vulnerability of India. Now this question, because it is of 10 marks, so we have to write very limited, but you can also include why the vulnerability of India for earthquake is rising. ठीक है, it is asking about the vulnerability, so we can also put one line or two lines about why the vulnerability is increasing. So we can mention that because of the increasing population density in the hilly areas, because of increased tourism activities, because of increased construction, increased hotels, restaurants, resorts, etc., which are being built in the Himalayan belt of India, which is earthquake prone. So our risk is increasing. ठीक है. Secondly, the population density in the zone 4 areas also, it is also increasing. For example, in Delhi or in the Tarai regions of the Himalayas, where there is the zone 4, at that place also the population density is increasing. So if a big earthquake happens in the Himalayan region, it will surely impact the mega cities of India. So for that reason also the vulnerability, that is the risk, is increasing.
Another point about the risk is that because we are building large multi-storied buildings, ठीक है, multi-storied buildings, skyscrapers, multi-stories malls, है ना, so these are also susceptible to very random ground shaking, तो उनको भी एक डेंजर है। तो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हम लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ बना रहे हैं, तो अर्थक्वेक की वजह से उनका डैमेज पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो ये भी रीज़न है कि वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया। तो आप दोनों तरीके से एड्रेस कर सकते हो, आइदर यू कैन जस्ट गिव द स्टैटिस्टिक्स और यू कैन गिव द चेंजिंग वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक्स। Now coming to the second part, discussing about the recent earthquakes in India. So this is very simple. Even if you don't know, you must surely be aware about the very big earthquakes in India in the recent past. For example, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको ये तो पता ही होगा कि 1993 में लातूर में एक बहुत बड़ा earthquake आया था। लातूर is in Maharashtra. One of the biggest earthquake happened in this area, and almost 52 villages were damaged because of this earthquake, and almost 10,000 or 12,000 people were killed. अब what is interesting about this earthquake, because it is asking about the salient features, तो interesting क्या है कि this earthquake was not in the interplate boundary region, ठीक है। तो we all know that the Himalayan region is at the plate boundary. The Indian plate is colliding with the Eurasian plate, and Indian plate is traveling in northeast direction. It is colliding with the Eurasian plate. इतना हमको पता है। तो जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज हैं वहाँ तो अर्थक्वेक आना इज नेचुरल, बिकॉज द प्लेट्स आर कोलाइडिंग एंड देयर इज बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेस। बट ड्यूरिंग द लातूर अर्थक्वेक वी ऑब्जर्व्ड कि इट इज नॉट एट एनी प्लेट बाउंड्री, इट इज एट द इंट्रा प्लेट रीजन। तो इट इज इंट्रा प्लेट रीजन, एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूज अर्थक्वेक एट द इंट्रा प्लेट रीजन हम लोगों को बड़ा क्वेश्चन मार्क हुआ कि व्हाट इज द मैप ऑफ इंडिया, मतलब द अर्थक्वेक मैप ऑफ इंडिया। वी क्वेश्चन दैट, एंड उसके बाद हमने पूरा अर्थक्वेक मैप ऑफ इंडिया को रिवाइज किया। आफ्टर दिस जो हमारे जोन 2 है एंड जोन 1 दे वर मर्ज्ड, जोन 2 एंड जोन 1 वर मर्ज्ड, एंड मैनी पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू वर ब्रॉट इन द जोन 4, ठीक है, ऑफ द वेरी हाई, मतलब हाई रिस्क जोन्स। So we revised the earthquake maps of India based on this intraplate earthquake. Earlier we thought that earthquakes were only at the interplate region, but the Latur earthquake showed कि earthquakes can also happen at the intraplate region. Then 2001 का आपका भुज earthquake है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें huge damage हुई, there was a huge damage. This was based on a reactivated fault line, ठीक। एंड इसकी खास बात क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस, दिस अर्थक्वेक वाज इन दैट रीजन व्हिच वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड, ठीक है। द हाउसेज इन द भुज एंड द बेसिकली द सिविल हॉस्पिटल, इवन द सिविल हॉस्पिटल ऑफ द भुज एरिया, दैट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड द आर्मी हैड टू कम इन टू प्रोवाइड इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। तो इसकी वजह से ये दिखाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन सर्वाइविंग द अर्थक्वेक्स। Even many tall buildings in the Ahmedabad region, they were also grounded. They also sustained a huge damage because of this earthquake. So this earthquake showed us the importance of the infrastructure. Similarly, there were other earthquakes also. For example, in the 2004, अब ये earthquake इंडिया में नहीं आया। 2004 का जो earthquake है, it was in the Indian Ocean earthquake. It is known as the Indian Ocean earthquake, and this happened off the coast of Indonesia, ठीक है। But it led to a huge tsunami. Which devastated the coastal areas of India. So when the tsunami came to India from Indonesia in about 2 hours, at that time the tsunami waves which reached India, they were about 5 meters high. So you can just imagine 5 meters of ocean water coming toward the land. So what kind of damage it can do. So this also caused a huge amount of damage. Mind you, the silent feature of this earthquake was that it was a very massive earthquake. It was on the Richter scale, it was of 9.1 to 9.3 magnitude. Such massive earthquakes are very rare. And this is the silent feature of this earthquake. It was very rare and this caused a huge tsunami. This vibration of this earthquake was so huge
that the vibrations were felt till Canada and Alaska also. ठीक है, बहुत दूर तक इंडिया अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में पूरी वाइब्रेशन इसकी गई थी. सिमिलरली इफ वी सी, उसके बाद बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए इन द 2009. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे एक सिमिलर टाइप का अर्थक्वेक आया, सिमिलर टाइप का ऑफ इन द इंडियन ओशन. द सेकेंड बिगेस्ट अर्थक्वेक आफ्टर दिस इंडियन ओशन 2004 अर्थक्वेक वाज द 2009 वन. तो ये भी काफ़ी बड़ा सब्सटेंशियल अर्थक्वेक था, और इसकी वजह से भी जो सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है इंडिया का, उसने एक अर्ली वार्निंग रिलीज करी फॉर द सुनामी. बट फॉर्चुनेटली इनफ द सुनामी वाज नॉट देयर एंड दैट वार्निंग वाज लिफ्टेड आफ्टर सम टाइम. तो ये भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक था. इसके बाद 2011 में आपका सिक्किम में अर्थक्वेक आया, इसमें भी काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई. तो वी कैन जस्ट राइट अबाउट सम ऑफ दीज अर्थक्वेक एंड द salient features. Apart from these earthquakes, there are few other major earthquakes which happened in the Indian subcontinent. For example, एक 2005 में आपको याद होगा, if you are able to remember, 2005 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक अर्थक्वेक आया था POK में. अब ये अर्थक्वेक बड़ा ही डेंजरस था और इसके इम्पैक्ट्स इंडिया में भी देखने को मिले, बट द मेजर डैमेज वाज इन द POK रीजन. एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी सैड रियलिटी कि इस अर्थक्वेक में अप्रॉक्सीमेटली 80,000 लोगों के आसपास की डेथ हुई. मतलब सम फिगर्स से द डेथ वाज मोर देन 80,000. सो इट इज़ वेरी सैड रियलिटी. इसके अलावा ये अर्थक्वेक ये दिखाता है कि अगर हिमालयन रीजन में बड़ा अर्थक्वेक आता है तो व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट्स. ठीक है, ये सिर्फ एक इम्पैक्ट दिखाता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवास्टेशन दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ सच अर्थक्वेक्स. इसके अलावा आपका 1967 में, ये तो आपके 33 डेकेड पीरियड से बाहर निकल गया है, तो 1967 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था कोयना में, और ये अर्थक्वेक था रिजर्वायर की वजह से, ड्यू टू लेक्स. मतलब अ डैम वाज क्रिएटेड एंड बिकॉज ऑफ द डैम व्हेन द डैम वाज फिल्ड इट वीकेंड द रॉक्स अंडरनीथ इट, और उसकी वजह से रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी की वजह से अर्थक्वेक आया. इसकी वजह से भी हमने अर्थक्वेक मैप्स को थोड़ा रिवाइज करा. ठीक है, तो ये सारे अर्थक्वेक्स हैं, जैसे कि 1999 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक आया था. चमोली डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक आया था, इसकी वजह से ह्यूज लैंडस्लाइड हुई थी. लैंडस्लाइड एंड द एंटायर वैलीज ऑफ मंदाकिनी एंड द सराउंडिंग वैलीज, दे वर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेट. So these are few major earthquakes. You can write about them if you remember. You already have written the answer, but this is the approach. So even if you don't know about this earthquake or this earthquake, then also you can write something about these major earthquakes which are there. तो ये मेजर में से आपको 2-3 तो आपको डेफिनेटली पता ही है. जरूरी नहीं है कि आपको सारे अर्थक्वेक के बारे में पता हो. If you know the basics about 3 or 4 earthquakes, then you can draw some salient features from that. इसमें अब यहाँ आप आंसर को कंक्लूड कर दोगे. इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताना चाह रहा हूँ कि इन इंडिया 1897 से लेकर 1950 तक 4 ग्रेट अर्थक्वेक्स आ चुके हैं. 4 ग्रेट अर्थक्वेक्स आ चुके हैं. और ग्रेट अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? विच हैव मैग्नीट्यूड मोर देन 8 ऑन द रिक्टर स्केल. मैग्नीट्यूड मोर देन 8. तो इसका जो लेटेस्ट था वो 1950 में ही आया था. 1950 में असम तिब्बत अर्थक्वेक इन 1950, उसका मैग्नीट्यूड 8 के बियॉन्ड था. तो 8 के जो बियॉन्ड वाले अर्थक्वेक्स होते हैं दे आर वेरी वेरी डैमेजिंग, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजरमेंट है वो रिक्टर स्केल पे होता है, एंड दैट इज अ लॉगरिथमिक स्केल, एंड एवरी टाइम यू इंक्रीज 1 यूनिट ऑन द रिक्टर स्केल द एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इंक्रीजेज 10 फोल्ड्स. ठीक है, तो 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक और 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में बहुत डिफरेंस है, 10 टाइम्स एनर्जी का डिफरेंस है. और फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में 4 ग्रेट अर्थक्वेक्स आए हैं, बट अभी तक रिसेंटली हम लोगों ने ग्रेट अर्थक्वेक्स नहीं देखे हैं इन द इंडियन पेनिनसुला. ठीक है, इंडियन रीजन में हमने नहीं देखा है, इंडियन ओशन में आए हैं या सराउंडिंग एरियाज में आए हैं. तो ये एक वार्निंग है कि some kind of stress may be building, and scientists are advising कि there may be a very huge earthquake in the Himalayan region in the coming few years, and we have to be prepared for it, because we have not seen a very great earthquake in the Himalayan region in the recent past. North East region में तो 6 मैग्नीट्यूड का earthquake हर साल आता है. ठीक है, it has become an average approximately every year
1 or 2 earthquakes come of the 6 magnitude. तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में तो आते ही रहते हैं, बट बड़ा अर्थक्वेक अगर आ गया तो व्हाट डैमेज इट कैन डू, especially to the mega cities, for example Delhi or other cities in the Uttar Pradesh, or if it hits some other mega cities of the country, what kind of damage it can do, you can just imagine. ठीक है, तो with this you can conclude the answer. The conclusion should be always positive that in India is prone to earthquakes. The vulnerability of India is increasing, so we have to invest in the earthquake preparation, earthquake mitigation and preparation measures. ठीक है, तो इसके साथ आप आंसर कंक्लूड करो. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है वेरियस कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ द लैंडस्लाइड्स. ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन. मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं. तो फॉर दिस इट इज़ वेरी इजी. तो आइदर यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली विद द डेफिनेशन ऑफ द लैंडस्लाइड. That landslide is sudden mass movement of rocks and debris down a slope under the influence of gravity. Or you can just start off that India is vulnerable to landslides, and especially the hilly areas of the Himalayan regions are categorized as a very high vulnerability zone. ठीक है, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो. और उसके बाद causes and effects लिखने हैं लैंडस्लाइड के. तो let us discuss a few causes and a few impacts of the landslides. तो the causes of the landslide can be, the first cause of the landslide can be earthquakes. Because of earthquakes, landslide can happen. Because of heavy rainfall, landslides can happen. Because of freezing and thawing of water in mountains in high altitudes. हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो वाटर है वो फ्रीज होता है और थॉ होता है. फ्रीज मतलब जमता है और फिर पिघलता है. व्हेन द वाटर फ्रीजेज इट एक्सपैंड्स अ लिटिल बिट. सो द वाटर विच इज इन द क्रैक्स इन बिटवीन द माउंटेन्स, व्हेन इट एक्सपैंड्स द क्रैक्स ऑल्सो एक्सपैंड्स. सो स्लोली एंड स्लोली दीज क्रैक्स बिकम बिगर एंड बिगर. अल्टीमेटली दे कैन लीड टू लैंडस्लाइड. तो ये कुछ रीजन्स है. इसके अलावा देयर कैन बी अदर रीजन्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन. Deforestation destabilizes the land. So there is a high amount of deforestation in the Himalayan belt of India. You can, if you go and see, you can easily observe the amount of deforestation that is there. And after deforestation, construction activities can be either for tourism purpose. ठीक है, like hotels, resorts, है ना, guest houses, these are being built in the hilly areas. Apart from this, there can be infrastructure related construction activities. For example, roads, highways, bridges, communication lines, etc. So all these construction activities can also weaken the land. And the last thing, last cause of the landslide can be mining activities. ठीक है, those areas in India which are relatively stable, but they experience some kind of mining activities. Example, Jharkhand, Chhattisgarh, Goa, Maharashtra. So and they have some kind of hilly regions. Okay, these are categorized under moderate to low vulnerability risk zones for landslides in India. So mining includes a lot of things. For example, blasting activities are also done during the mining activity. So all these things can lead to sudden landslides, sudden movements in the land. So these can be the reasons for the landslides. These can be the reasons for the landslide. You can also divide these reasons into natural reasons and anthropogenic reasons. But these are the main causes of the landslide. Now, what can be the impacts of the landslide? Very, very simple. Impacts of the landslide. Impacts of the landslide can be, first, there is loss of life and property. That is always there. Life and property तो loss होगी ही होगी. For example, in the last question we discussed 1999 में चमोली में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें मंदाकिनी वैली एंड सराउंडिंग वैलीज वर कट ऑफ. सो द वाटर सप्लाई, द कम्युनिकेशन लाइन्स, द ट्रांसपोर्टेशन टू दैट area that was completely stopped. So this is also an impact of the landslide. इसके अलावा other impacts can be degradation of the environment, degradation of environment, ecosystem of that area. The entire trees, lakes, etc. they are completely destroyed. So entire ecosystem is degraded and destroyed. Other impacts can be
डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल रोड्स, रेलवेज, ठीक है, communication lines, these can be damaged, communication lines these can be damaged, so this can have a large long term economic impact also, ठीक है. For example, if a area is cut off from the rest of the country and many years are taken to rebuild the roads again, so that can have long term economic impacts of that area. Other impacts of the landslide can be migration of people from landslide prone area, so this can increase stress in the cities. There can be social impacts also. For example, in the 2015 Nepal earthquakes, and we saw that after the earthquakes there was a huge rise in the cases of trafficking, kidnapping and trafficking of children and women. So social impacts of landslides or such disasters can be there in the hilly areas. And landslides का और impact क्या हो सकता है? One impact can be shifting in the course of the river, shifting of river courses. River course shift हो सकते हैं. For example, Kali river in 2016 there was a huge landslide in the Kali river, जो धारचूला के पास इंडिया नेपाल बॉर्डर पे काली रिवर फ्लो करती है. एंड देयर इन 2016 देयर वाज अ ह्यूज लैंडस्लाइड एंड द काली रिवर शिफ्टेड इट्स कोर्स, है ना. तो ये रिवर शिफ्टिंग के कोर्स भी लैंडस्लाइड का एक इम्पैक्ट हो सकते हैं. सपोज द रिवर इज फ्लोइंग एंड अ ह्यूज रॉक कम्स इन द पाथ ऑफ द रिवर, इट अल्टीमेटली हैज टू शिफ्ट और द स्लोप ऑफ द लैंड कैन बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड. तो ये शिफ्टिंग द कोर्स ऑफ द रिवर की वजह से आपकी फ्लड्स आ सकती हैं. Some areas can be flooded because the river starts to flow in that area, so these areas can be flooded. Some areas can see droughts also because the river has moved away from that area, so it can see droughts. So these can be the different impacts of the landslide that can happen. ठीक है. तो causes and impacts लिख लिया. अब हम चलते हैं next part of the question पे. National landslide risk management strategy को discuss करना है. Even if you don't know exactly what the strategy is, there is always some bullet points that you can always write. तो national landslide risk management strategy के जो main points हैं, I will just note down the main points. Number one is landslide mapping. Landslide hazard zonation. So that is basically mapping of the landslide areas in India, and the mapping has to be done at the macro level and the meso level. ठीक है, macro level and meso level. Macro level means at the level of the country and the state. Meso level means at the level of the individual cities and individual areas, individual places ki which place is more vulnerable to landslide. For doing this mapping work, we have to use high-end state of the art technology. High-end state of the art technology. For example, what we can use? We can use UAV. We can use high resolution earth observation data. We can use high resolution lasers to map the ground at the accurate level. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. Mapping हमको करनी है. The second point, after mapping, what can be the logical step after the mapping? You should prepare a national level inventory for landslide, different landslides in India. तो national और state level inventory आपको बनानी है for different landslides in India. Then next can be the early warning system for landslide. तो that can be landslide monitoring. अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंडस्लाइड एंड लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी. तो अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लैंडस्लाइड, ठीक है, दैट इज पॉसिबल, दैट कैन बी मेड. यू जस्ट हैव टू कंबाइन द डेटा ऑफ द सिस्मोलॉजिकल डेटा, दैट इज द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. तो सिस्मोलॉजिकल सेंसर जो ग्राउंड में है उनका डेटा, दैट इज द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड लेवल, दैट यू कैन टेक. You can take the data from the IMD, that how much rainfall is about to happen in the coming few days. You can take the data of the past landslide inventory and you can predict कि what is the possibility of landslide in a particular area. तो इसमें
आपको रेनफॉल थ्रेशोल्ड बेस्ड प्रिडिक्टिंग सिस्टम बनाना है आपको, लैंडस्लाइड प्रिडिक्टिंग सिस्टम। तो इसके लिए आपको आईएमडी और सेंट्रल वाटर कमीशन के रेन गॉजेस और डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म को इम्प्रूव करवाना है, सो दैट यू हैव बेटर डेटा फॉर रेनफॉल प्रिडिक्शन इन हिली एरियाज एट लीस्ट। सो दिस कैन बी वन। फिर अर्ली वार्निंग के बाद अगर आपके पास अर्ली वार्निंग है बट लोग अवेयर नहीं है, तो कोई भी उसका सोल्यूशन, देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग एन अर्ली वार्निंग इफ द पीपल आर नॉट अवेयर। So the third point is obviously awareness generation in the people. The local community is the first one to respond to any disaster. If they are aware how to respond to a disaster, the response will be better. So awareness generation in the community at the local level, and then fourth will be training and the capacity building. Training and capacity building. Training and capacity building at the national and the state level. So in the training and capacity building, you will identify what is the gap in the training and the abilities of our community, of our administration, of our response forces in times of disasters, and then you will try to fill the gap by improving their capacity, that is either providing them with some equipments or some additional resources, or training them. ठीक है, तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द लैंडस्लाइड प्रिपरेशन, मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट इज, अब ये सब करने के बाद आपको अल्टीमेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन अपग्रेड और रिवाइज और बिल्ड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज इन द माउंटेन जोन्स। तो माउंटेन जोन पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस हैव टू बी बिल्ट बेस्ड ऑन द लैंडस्लाइड मैप्स। ठीक है, तो विद दोज एरियाज विच आर मोर वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स, देयर पॉलिसीज शुड बी डिफरेंट, the amount of infrastructure in that area should be limited, the amount of activities जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर टूरिज्म, that should be regulated। ठीक है, तो अपग्रेड और रिवाइज और बिल्ड द माउंटेन जोन regulations and policies with respect to the landslide zone maps। तो इसमें जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के एग्जिस्टिंग कोड्स हैं उनको रिवाइज करना है, अपग्रेड करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, खाली रिवाइज और अपग्रेड नहीं करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो यू हैव टू एनफोर्स ऑल्सो, you have to enforce also, you have to upgrade, revise or build the codes or regulations, and you have to also enforce them। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आपके पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बिल्डिंग कोड्स हो जाएंगे, जब आपको उसको एनफोर्स कर पाओगे, जब आप ऑडिटिंग करोगे प्रॉपर, ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट चीज़ आपकी है वो है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन of slopes and regular audits। ठीक है, तो स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। एफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट वे टू स्टेबलाइज अ पर्टिकुलर स्लोप। आफ्टर दैट यू कैन यूज जियो टेक्सटाइल्स। These are synthetic textiles that can be spread on a large area of land. They can help to stop the land from sliding down। तो जियो टेक्सटाइल्स हो गई आपकी, वायर एंड नेट मैश बिछा सकते हो आप, आयरन मैश बिछा सकते हो ताकि जो लूज रॉक्स हैं वो स्लाइड ना हो। तो स्टेबलाइजेशन एंड द रेगुलर ऑडिट्स ऑफ द टू इंश्योर दैट दीज कोड्स आर इम्प्लीमेंटेड। तो ये मेजर इसके नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी है उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो विद दिस यू विल हैव सफिशिएंट डेटा टू राइट इन योर आंसर। 250 वर्ड्स का आंसर तो आप इजीली लिख सकते हो। आफ्टर दिस यू कैन ऑलवेज कंक्लूड दैट बिकॉज इंडिया इज सीइंग एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी इन द हिली एरियाज। फॉर एग्जाम्पल इन द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो वी आर सीइंग इंक्रीज एक्टिविटी बिकॉज ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। In the Himalayas also we are seeing the same because of tourism and because of high population density. So because of this the risk is increasing, the vulnerability is increasing, and therefore we have to take steps in order to prepare and mitigate the impacts of the landslide.
So with this you can conclude your answers, and these are the two questions we have discussed for the disaster management. Thank you everyone, and I hope you have written a good answer for at least these two questions, because these were on the traditional lines. Thank you.